In this video, we'll discuss about mitochondria. Mitochondria is also called as powerhouse of the cell. Why it is called as powerhouse of the cell? This helps in generation of ATP. ATP is adenosine triphosphate. It is also called as energy currency of a cell. This ATP is used in many metabolic activities, and this is being produced with the help of mitochondria. So, mitochondria is called as powerhouse of the cell. Now, mitochondria has its own DNA independently. So, this is also called as semi autonomous organelle. Because of the presence of DNA inside the mitochondria, this can carry out many its functions independently. So this is called as semi-autonomous organelle. Rest of the structure we'll discuss in detail one by one. Now if we see mitochondria, this is a cell organelle present inside the cell. This is a cell and this is its nucleus, DNA. And here we can see mitochondria is present here in the cell as a cell organelle, which is helping in respiration, and this helps in release of energy during respiratory phenomena, and this is also called as cellular respiration, and during that phenomena this helps in production of ATP, which is called as adenosine triphosphate. Now if we see the structure of mitochondria in detail, we can see here this is bounded by two membranes. One is present toward the outer side, so this is called as outer membrane, and another is present toward the inner side. This is being produced into crystal folds like this, and this is called as inner membrane. This whole is inner membrane. So this is outer membrane and this is the inner membrane. In between space is present. This is called as intermembrane space. Intermembrane space. And inner membrane is being produced into folds called as crista. And it has another cell organelle called as ribosomes. Ribosomes in mitochondria are of 70S type. Now mitochondria is also called as powerhouse of the cell because this helps in generation of ATP, which is called as adenosine triphosphate. Now we'll discuss its structure in detail. So we have discussed this is bounded by two membranes. So this is double membrane bounded organelle, which is found in eukaryotic organisms. You know what are eukaryotes and what are prokaryotes. This I will share a link in the description box. Prokaryotes are bacteria and cyanobacteria, and other living beings on that they are eukaryotes. And in the red blood corpuscles, mitochondria is not found. So mature red blood corpuscles they lack mitochondria. Mostly they have ovoid shape, otherwise they may have different shape during various kind of stress conditions. Now if we see the structure in detail, like we have discussed, this is bounded by two membranes, outer and inner membrane, and they're separated by intermembrane space. Now each of the membrane, if we see, this is outer membrane and this is the inner membrane. Each of the membrane has a thickness, right? So outer membrane will have about 60 to 70 angstrom thick, and this is trilaminar in nature, mean this is made up of phospholipids and proteins. Membrane structure is made up of phospholipids and proteins, and this has two layers of phospholipids and protein. So outer and inner membrane, like we discussed, this is outer membrane and this is the inner membrane, and this is separated by intermembrane space, like we discussed earlier also. So outer membrane, if we see the outer membrane, this is about 60 to 75 angstrom thick, right? Like discussed, this is made up of phospholipids and protein. And in addition to this, this outer membrane has porins, right? Through these porins, things can pass inside and outside. अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है. Porins से transportation हो सकता है. So these are porins present in the outer membrane.
So next is intermembrane space. Like this is the outer membrane, this is the inner membrane, and this space is called as intermembrane space. This is also called as perimitochondrial space. Cytochrome C is localized in this space. Cytochrome C is iron containing protein. Cytochrome is iron containing protein, and this may be localized here in the intermembrane space. So this is localized in the intermembrane space, which is iron containing protein. Then we'll discuss about inner membrane. Now inner membrane does not have porins. Like this is the inner membrane, and this will not have porins. So this is selectively permeable. Selectively permeable mean जो कुछ चीज़ें जो अंदर जा सकेंगी सिर्फ वही जा सकेंगी, सिलेक्टिवली जा सकेंगी, सब लोग नहीं जा सकते. ऐसा नहीं है कि सारे अंदर चले जाएंगे, ऐसा नहीं है. जो जिसको वो जाने देगी वही मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जा पाएगा. तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमेएबल. मीन दिस विल अलाउ सिलेक्टिव एंट्री ऑफ द थिंग्स टूवर्ड द इनर साइड एंड डजंट हैव पोरेन्स. जैसे आउटर मेम्ब्रेन में पोरेन थे, इसमें नहीं है. Inner mitochondrial membrane has outer face called cytosol or C phase, and inner surface toward matrix is called as M phase. Like if we see the structure of this mitochondria, we can see this is the outer membrane and this is the inner membrane. बीच में ये space को बोलते हैं हम intermembrane space. तो जो अंदर वाली membrane है, this inner membrane, this part is called as matrix of mitochondria. तो ये जो matrix है, इनर मेम्ब्रेन इसको फेस कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज मैट्रिक्स फेस, राइट. जो साइटोसोल को फेस कर रहा था उसको हम बोलते हैं सी फेस, राइट. सो वी कैन से इनर मेम्ब्रेन जो मैट्रिक्स को फेस कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज एम फेस, और जो साइटोसोल को फेस कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज सी फेस. नाउ इसमें जैसे हमने कहा कि दोनों चीज़ें हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फॉस्फोलिपिड्स भी हैं, साइटोक्रोम्स भी हैं, विच आर कॉल्ड एज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन. एंड साइटोक्रोम्स की डिटेल्ड वीडियो मैं लिंक शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बेसिकली दे आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर. दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन because they have iron in the reduced as well as in the oxidized form. So that is called as redox reaction, where reduction as well as oxidation take place. And during that phenomena, ATP synthase plays an important role, which will help in formation of ATP in the matrix. So there are specific proteins which can regulate entry of metabolite inside and outside of the mitochondrial matrix. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है, मेम्ब्रेन कैन रेगुलेट दैट थिंग, राइट. सो ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है. तो अब हमने देखा कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है दैट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इनटू फोल्ड्स लाइक दिस, राइट. सो वी कैन सी हियर इफ़ वी एनलार्ज इट, वी कैन सी हियर दिस हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड इनटू क्रिस्टा. ये जो फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा. और ये जो पार्ट है सारा इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. और ये इसका अपना डीएनए है जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली. तो इसमें इसके राइबोसोम्स भी हैं जो 70S टाइप होते हैं, ऐसी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. अब ये जो इंटरमेम्ब्रेन फोल्ड्स हैं विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टा, सो इससे इसका सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है, दिस विल बी मोर. So this will enhance the production of ATP और adenosine triphosphate. तो अगर हम एक फोल्ड, ये जो फोल्ड आ रहा है इसकी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देखें तो वी कैन सी हियर ये जो फोल्ड्स हैं वी कैन सी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. सो दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ द इनर मेम्ब्रेन. सो दिस फेज इज़ कॉल्ड एज एम फेज, राइट. सो दिस इज़ इंटर क्रिस्टल स्पेस. ये जो क्रिस्टा बन रहा है, फोल्ड बन रहा है, तो ये वाली जो स्पेस हो गई दिस इज़ कॉल्ड एज इंटर क्रिस्टल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन. एंड दिस इज़ द साइटोसोल और सी फेस. एंड ये वाला जो फेज़ हो गया दैट इज़ कॉल्ड एज, जैसे ये मेम्ब्रेन है, अगर मेम्ब्रेन का ये वाला जो फेज़ हो गया दिस इज साइटोसोल और सी फेस, और जो बाहर की तरफ फेस कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स और एम फेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन. अब इसमें आप देख रहे हैं स्पेशल एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स बोलते हैं ना. ये F1 पार्टिकल्स बोलते हैं ऑक्सीसोम्स. ये जो इसका बेस है F0 और ये जो इसका ऐसे प्रोट्रूडेड हेड बना हुआ है दिस इज़ F1.
और ये इसको दोनों को जो अटैच कर रहा है दिस इज़ कॉल्ड एज स्टॉक. सो दिस इज़ F0 F1 पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम्स जो ATP फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ATP सिंथेज के साथ. तो अगर हम इसको डिटेल में देखें, यहाँ पर ऐसे ये मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टा का ऐसे फोल्ड अंदर मेम्ब्रेन ऐसे जा रहा फोल्ड हो रहा है. तो यहाँ पर इस जगह अगर हम देखेंगे इस जगह पर ये पड़े हुए हैं. यहाँ पर जैसे हमने देखा कि ये इसका बेस है, ये इसका स्टॉक है, हेड है, ये बीच में इसको स्टॉक कनेक्ट कर रहा है. F1 पार्टिकल्स हम बोलते हैं which help in formation of ATP. So these are F1 particle or oxysomes which help in formation of ATP सिंथेज जो एंजाइम जो है वो ATP फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सो मैट्रिक्स जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया के सेंटर में क्या होता है, जो अंदर की तरफ है मैट्रिक्स है. मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम राइबोसोम्स और DNA हैं. और ये जो मैट्रिक्स है बेसिकली जैसे जो अंदर की मेम्ब्रेन आ रही है ऐसे करके फोल्ड्स आ रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है. और मैट्रिक्स में साइकिल होता है विच इज़ कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल. वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. जिसमें रेस्पिरेटरी फिनोमिना होता है. रेस्पिरेशन इज़ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ड्यूरिंग दैट फिनोमिना ATP इज़ बीइंग प्रोड्यूस. तो उसमें बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया जो साइटोप्लाज्म में होता है. देन सिट्रिक एसिड साइकिल जो मैट्रिक्स में होगा, यहाँ पर इस जगह पे होगा मैट्रिक्स में. और ये जो फोल्ड्स आ रही हैं जिसको हम क्रिस्टा बोलते हैं, इसमें होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें बहुत सारी साइटोक्रोम्स इन्वॉल्व है. वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ATP, राइट. और ATP के जैसे हमने डिस्कस किया कि F0 F1 पार्टिकल्स हैं जो उसमें हेल्प करते हैं. सो मैट्रिक्स हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ ATP एज वेल एज मैट्रिक्स में बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं जो सिट्रिक एसिड साइकिल में हेल्प कर रहे हैं. जैसे हमने डिस्कस किया मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी हैं जिसको हम 70S मीन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. इसका अपना DNA है जिसकी वजह से ये सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है. फिर इसमें अपने RNA मॉलिक्यूल्स हैं जो तीनों तरह के हो सकते हैं. तो अगर हम इसका फिर से स्ट्रक्चर देखें, एक बार रिविजन कर लेते हैं. दिस इज़ द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. सो दिस इज़ द आउटर मेम्ब्रेन, this is the outer membrane, right. This is the outer membrane of the mitochondria जो इसको बाहर की तरफ से एनवेल्प कर रहा है, जिसमें पोरिन्स हैं जिसकी हेल्प से इसके चीज़ें अंदर जा सकती हैं या बाहर जा सकती हैं. ये अंदर वाली मेम्ब्रेन है जो ऐसे क्रिस्टा में ऐसे फोल्ड्स में प्रोड्यूस हुई है. अब इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टा बोलते हैं, राइट. अब ये दोनों में जो स्पेस बच जाता है दिस इज़ कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ATP, जिसमें बहुत सारी साइटोक्रोम्स या आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं. आई विल शेयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अब ये जो अंदर वाला सारा पार्ट है इसका दिस इज़ कॉल्ड एज मैट्रिक्स, जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल होता है. इसमें अपना ये DNA है. तो इसके लिए इसको हम बोलते हैं बिकॉज इसका अपना DNA है, ये इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, सेमी इंडिपेंडेंट है. एंड दीज आर राइबोसोम्स जो इसमें प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. राइबोसोम्स जो हैं वो 70S टाइप हैं, ऐसे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. इसमें अपना RNA है, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA. So this is all about structure of mitochondria. Partially we have discussed its function. This is called as powerhouse of the cell because this produces lot of energy in the form of ATP, and mitochondria plays an important role in the respiration phenomena. तो इसमें 2 cycles होते हैं respiration के. one is citric acid cycle and second is दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें एंड में ATP फॉर्मेशन होता है. तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया. Thank you for watching my video. If you have any questions, you can ask me in the comment box. If you like my video, please like, share and subscribe.